आज इस वीडियो में हम खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड क्लास 9 सितंबर 2016 फिजिक्स पेपर 1 सॉल्व करेंगे. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 1. So here we have our question number 1. Which of the following quantity is measured by using this given instrument? So we have an instrument and the name of this instrument is physical balance. इस फिगर के अंदर जो हमें एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इसका इट इज़ फिजिकल बैलेंस. और अगर हम रिकॉल करें कि विच क्वांटिटी इज़ मेजर्ड बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ मास. मास हम मेज़र करते हैं बाय यूजिंग दिस इंस्ट्रूमेंट एंड दिस फिजिकल बैलेंस इज़ ऑल्सो नोन एज बीम बैलेंस और दिस इज़ ऑल्सो लेबर बैलेंस. ये वो इंस्ट्रूमेंट हैं जिसको यूज़ करके हम मास मेजर कर सकते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन वी हैव इन क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन ए, दैट इज मास. So quickly let's move to our next question, question number 2, 3 and 4. In question number 2, the prefix that is used for the multiple value of 10 raised to the power 6. अगर हम प्रीफिक्सेस के नेम्स और उनकी मल्टीपल वैल्यूज़ को रिकॉल करें, सो हमने पढ़ा था दैट 10 रेज टू द पावर प्लस 6 इज नोन एज मेगा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 10 raised to the power 6 is mega. While 10 raised to the power minus 6 is known as micro. जबकि यहाँ जो ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है मेगा और माइक्रो के अंदर. सो करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑप्शन सी. Let's see question number 3. A whiteboard marker has a diameter of 2 millimeters and we have to convert this diameter into millimeters into centimeters. हमें मिलीमीटर में वैल्यू गिवन है और मिलीमीटर से हमें कन्वर्जन करनी है इनटू सेंटीमीटर. So as we know that the millimeter is a smaller unit while centimeter is a larger unit and 1 centimeter is equal to 10 millimeters. So conversion factor इनके दरमियान 10 का है. So अगर हम मिलीमीटर से सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्जन करते हैं तो we will divide by 10. while सेंटीमीटर से अगर हम मिलीमीटर के अंदर कन्वर्जन करते हैं तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे by 10. So 2 millimeters will be divided by 10 to convert into centimeters, so we will get 0.2 centimeters. So correct option is option B. Next we have question number 4. In which of the following types of motion do particles of the body have the motion in a straight line? ऐसा मोशन जिसमें बॉडी के तमाम पार्टिकल्स एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव करते हैं. सो दैट type of motion is known as translatory motion. As we know that the linear motion is also a type of translatory motion. So for example, अगर ये एक बॉडी है और ये बॉडी इस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है, तो इस बॉडी के अंदर तमाम पार्टिकल्स की जो मोशन है वो सेम डायरेक्शन में होगी. इस बॉडी के अंदर मौजूद तमाम पार्टिकल सेम डायरेक्शन में अलोंग अ स्ट्रेट लाइन मूव कर रहे होंगे. जबकि फॉर एग्जांपल अगर एक रॉड है जो कि इस फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन के अंदर, तो यहाँ मौजूद पार्टिकल का मोशन की डायरेक्शन इस तरह से होगी, यहाँ मौजूद पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ मोशन कुछ इस तरह से होगी. तो तमाम पार्टिकल्स सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते. जबकि ट्रांसलेटरी मोशन की जो टाइप है लीनियर मोशन, उस मोशन में तमाम पार्टिकल्स स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑप्शन सी.
Let's see question number 5. In this given diagram, we have a path taken by a girl from her school to home. School से लेकर home तक एक path हमें given है, and this the length of path, we know that the length of the path taken by the body is equal to the distance covered by that body. जो path की length है उसे हम distance कहते हैं, जबकि दो पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो स्ट्रेट लाइन है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो स्कूल से लेकर होम तक ये जो स्ट्रेट लाइन है, द स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है और हमेशा फाइनल पोजीशन की तरफ होती है. सो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑप्शन रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल. So as I have drawn the displacement with the blue arrow, so the correct option we have is option B, in which the straight arrow is used to represent the displacement from school towards the home. Next, we have question number 6 and 7. Which of the following set of physical quantities contains only scalar quantities? हमें वो quantities बतानी है that are directionless, जिसमें direction की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ magnitude required होता है. So in option D, we have a displacement and velocity that are vector while time is a scalar. Similarly, distance and speed are scalar while the acceleration is vector, and displacement is vector while velocity is vector and mass is a scalar. So correct option is option A, in which distance is a scalar quantity, mass is a scalar quantity, while speed is also scalar quantity. So correct option is option A. Next, we have question number 7, in which we have a mass of an object that is equal to 0.7 kilogram. Mass हमें given है. Mass is equal to 0.7 kilogram. And then we have to find the weight of that object, and weight is equals, we know that weight is equals to mg. So W will be equals to mass is 0.7, and the value of gravitational acceleration is given, that is 10. So the weight of the object will be equal to 7 newtons. So correct option we have is option C, 7.0 newtons. Next we have question number 8. A passenger is standing in a moving bus. एक बस है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, और उस बस के अंदर एक पैसेंजर है जो कि स्टैंड कर रहा है. When the bus stops suddenly, अगर बस एक suddenly stop करती है, he bends forward. So ये जो person है वो forward direction में move करेगा, एक jerk feel करेगा forward direction में अगर बस suddenly stop हो जाती है. बिल्कुल इसी तरह से अगर एक stop बस है और वो suddenly start होती है, तो so that passenger will feel a bend backward. सिमिलरली अगर शार्प टर्न राइट को लें या शार्प टर्न लेफ्ट को लें, तो पर्सन ऑपोजिट डायरेक्शन में बेंड फील करेगा, एंड दिस बेंडिंग इज ड्यू टू अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी दैट इज नोन एज इनर्शिया. इनर्शिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो कि बॉडी को अपनी स्टेट में चेंज लाने से रेजिस्ट करती है, एंड दिस change, this opposition in the change of a state is due to the mass of the body, and that property is known as inertia. Next, we have question number 9, and a spanner is used to tighten a screw. If the torque is zero, we have to find the condition in which torque is zero, then the applied force will be. सो लेट्स सपोज वी हैव अ स्पैनर. ये स्पैनर का हमारे पास हैंडल मौजूद है, और इस स्पैनर के हैंडल के अंदर ये हमारे पास इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आ जाता है. कुछ इस तरह से हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया, और
Let's suppose this is the head of the spanner. इस स्पैनर के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 degrees. So let's say this is the force that is applied at an angle of 45 degree. Similarly, we have another force in option B that is acting at an angle of 270 degree. So this is the 270 degree, and option C in the same direction as that of moment arm. अगर इस स्पैनर के ऊपर अगर हम इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें, and last is the perpendicular to the moment arm. So we have these four forces, and we have to identify whether which options represents in which we have a zero torque. So we know that torque is maximum when force is perpendicular to moment arm L. So this force will produce maximum torque, this force will produce maximum torque. While the torque is minimum or torque is zero when force and moment arm are parallel, they are in same direction, or they are parallel to opposite to each other. So this is the force that produce zero torque. When the force and moment arm are in same direction, then the torque acting on that body will be equal to zero. Then we have question number 10. In the given diagram, which of the following positions of the cone are in stable equilibrium? So, if we recall what is stable equilibrium, the equilibrium in which the body can regain its original पोजीशन. अगर बॉडी को डिस्टर्ब किया जाए और वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाए, तो ऐसा इक्विलिब्रियम बॉडी का स्टेबल कहलाता है. तो अगर हम इन तीनों कोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, तो दिस कोन विल नॉट कम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो दिस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. while जो second हमारा है, it is the neutral equilibrium in which body will comes to a new position similar to the previous position. And the first cone is in the state of stable equilibrium, जिसमें अगर हम इसे डिस्टर्ब करते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10. Question number 11. Which of the following object will have the more stability? तो किस ऑब्जेक्ट के पास स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? सो वी नो दैट स्टेबिलिटी डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर. वन इज़ द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, while the other is the base area. जिस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड से ज्यादा करीब हो, इट इज लोअर्ड, द बॉडी इज कंसिडर्ड एज मोर स्टेबल, while the body with the greater base area is considered as more stable. So अगर हम इन ऑप्शंस के अंदर देखें, सो सबसे लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑप्शन सी में मौजूद है और ऑप्शन बी में मौजूद है, जबकि ऑप्शन सी में इस ऑब्जेक्ट का बेस एरिया ज़्यादा है, तो this body will be considered as more stable. Then we have question number 12. The weight of the body is the gravitational force exerted on the object by the earth. ग्रेविटेशन जो बॉडी का वेट होता है, वो बॉडी और अर्थ के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस फोर्स को ही हम असल में वेट फोर्स कहते हैं. लेट्स सपोज दिस इज अर्थ एंड दिस इज a particular body. So Earth attracts this body towards its center, and this force is the gravitational force or the weight force, and this force exists between that body and the Earth. Let's see question number 13. Newton's law of gravitation states that every body in the universe attracts every other body with a force that is known as gravitational force. And this gravitational force is directly proportional to the product of their masses, and this gravitational force is inversely proportional to the square of the distance between them. So
विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा है कि फोर्स किस चीज़ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो जैसे मैंने बताया इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Next, we have question number 14. Which of the following is responsible for the motion of planets around the sun? So, we know that planets revolve around the sun in a nearly a circular path, and to move a body in a circular path, we need a force that is known as centripetal force. So, this centripetal force required for planets to revolve around the sun is provided by the gravitational force that exists between the planets and the earth. So सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होती है प्लैनेट्स को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द प्लैनेट्स एंड द सन. सो करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन सी. Let's see question number 15. This given figure, if a block A is moved from lower position to the higher position, then how much work will be done? हमें work done calculate करना है, and we know that whenever the work is done on the body, that changes the height of that object. So the work done is utilized in increasing its potential energy. So work done in that case is equals to potential energy of that body, that is equals to mgh. So work is equals to mgh. The mass of that body is 10, the gravitational acceleration is 10, and the height of that body is 10. So the amount of work done, or the change in potential energy of that body, is 1000 joules. So 1000 joules of work is done on that body to move that body from position A to position B. Let's see question number 16. In this question, the gravitational potential energy at the ground level is taken as. So we always measure the potential energy with respect to the ground. So at ground level, the gravitational potential energy is taken as 0. Potential energy is equals to mgh, and at ground level height is 0. So potential energy at ground level will also be equal to 0. So the correct option is option A. Question number 17. If a cannonball of mass 4 kilogram is traveling at a speed of 40 meter per second, we have to find the kinetic energy of that ball. So the kinetic energy is equal to mv square over 2. So mass of the body is 4, and the velocity is 40 square divided by 2. So let's calculate this. 2 1 is 2, 2 2 is 4, and 2 multiplied by 40 square is 1600. So correct option we will get 1600 into 2, that is 3200 joules. So kinetic energy of that cannonball will be 3200 joules. Next, we have question number 18. The deforming force per unit length is known as what? So we know that the force that changes the length of length of any object is known as deforming force, and the force acting per unit length is known as stress. So the force, deforming force acting on a unit area is known as a stress, while the change in length, or the fractional change in length due to with respect to the original length, is known as strain. So the correct option for this question number 18 is option B. Next, we have question number 19. The density of an object can be calculated by using which principles? So, as we have studied in our chapter number 7, that Archimedes principle. Archimedes was a scientist that
uses his principles to calculate the densities of an unknown objects by using his formula. So the correct option for question number 19 is option C. Next, we have question number 20. And in question number 20, we have to identify the graph of an object that obeys Hooke's law. We know that in Hooke's law, the stress is directly proportional to strain, or the force is directly proportional to extension. So the correct option for this question is option D, in which force and extension are represented in a graph with a straight line. So the objects that obeys Hooke's law, the graph between their force and extension or stress and a strain is always a straight line. So option D is the correct answer for that question. Question number 21. A dented ping pong ball can be made round again by putting it in a boiling water. So let's suppose we have a ping pong ball in which there is an air inside that ball. If this ball is dented, so what happens if we put this ball into a boiling water? So the air inside that ping pong ball will expand, and due to expansion, the dent will be recovered, or that ball can regain its original shape. जो डेंट था बॉल के अंदर वो रिमूव हो जाएगा, बिकॉज जो एयर है इस बॉल के अंदर वो एक्सपेंड होगी, और उसकी एक्सपेंशन की वजह से वो बॉल दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज द एयर इनसाइड द बॉल बिकम्स हॉट एंड एक्सपेंड्स इन इक्वल डायरेक्शन. So correct option for this question number 21 is option D. Let's see question number 22. When water is heated in a test tube, the level of water in a test tube will fall and then rise. अगर हम ट्यूब के अंदर वाटर को या किसी भी कंटेनर के अंदर वाटर को फिल करते हैं, और फिल करने के बाद अगर हम ये वाटर का लेवल है, तो अगर हम उसे हीट करते हैं तो हीट करने से क्या होगा, द फर्स्ट द ग्लास और द कंटेनर विल एब्जॉर्ब द हीट एंड एक्सपेंस, एंड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ दैट सॉलिड कंटेनर, this level of water will fall, and when the heat reaches the liquid or water, then water will starts expanding. So the reason of the fall of that liquid is because the container will first expands, due to which the level of the water falls. So the test tube expands before the water is heated. So this is the reason why the level of the water in that container on that test tube will fall and then rise. Question number 23. The energy which transmits from a hot body टू अ कोल्ड बॉडी इज टर्म्ड एज, वो एनर्जी जो कि एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी के अंदर ट्रांसफर होती है, वी कॉल इट हीट, उस एनर्जी को हम हीट कहते हैं. बिफोर द ट्रांसफर दैट एनर्जी इज इन द हॉट बॉडी, एंड आफ्टर द ट्रांसफर एब्जॉर्प्शन इट इज इन द कोल्ड बॉडी. इस दौरान उस एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और ट्रांसफरिंग प्रोसेस के दौरान उस एनर्जी को वी कॉल हीट. Let's see question number 24. Metals are the good conductor of heat. We know that the process of heat transfer in solid is conduction, while in metal the process of conduction is fast as compared to non-metal. And the reason behind is the main difference that is between metals and non-metals, that metal contain some free electrons, and these free electrons take part in conduction process that makes easier for the heat to transfer through metal. So correct option we have for question number 24 is option A. Let's come to the last question of this year, question number 25. It is advised that when a house is constructed, a ventilator should be made at the top of the wall, while a window should be constructed at the center of the wall.
So let's say this is the wall, and we have made a ventilator at the top of the wall while the window at the center of the wall. So as we know that the air inside the room will heat up and become less dense and move upward. So hot air will move upward, and the cold air from the window will take place of that air. सो हॉट एयर लेस डेंस होने की वजह से एक्सपेंड होने के बाद लेस डेंस हो जाएगी और वेंटिलेटर के थ्रू इस रूम से बाहर चली जाएगी, और इस विंडो के थ्रू कोल्ड एयर उसकी जगह आकर ले लेगी. दैट विल हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द रूम. सो करेक्ट ऑप्शन वी हैव इज ऑप्शन सी, cool air from the window, cool air to enter from the window, and hot air will escape through the ventilator. So correct option for this last question is option C.